ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Hello students, now find the equation of a straight line which passes through the point -2, 3 and makes an angle of 60 degree with positive direction of x-axis. Now first of all we will be discuss what is written in the statement. In the statement we have to find the equation of the straight line which passes through the point. We have given a point in which the straight line passes and we want to find the equation of that straight line. And second thing, this straight line makes an angle of 60 degree with positive direction of x-axis. Now ਇਹ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ -2 ਐਂਡ 3 ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ x-axis. ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਿਸ ਸਮ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. Now first of all we have given the slope means m. We know slope of a line m tan alpha. Now in this case alpha is 60 degree, angle alpha कितना हुआ 60 डिग्री है. So m equal to tan 60 degree which imply m equal to tan 60 under root 3. Now what will we do? Which formula will we use? You already know point slope form formula we will be apply. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ point slope form formula ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. Now using point slope form. What is a point slope form formula? That is y minus y1 equal to m x minus x1. Now in this case x1 and y1, that is x1 equal to -2 and y1 that is 3. Put the values in the given formula. What we get? Y minus y1 that is 3 equal to m that is under root 3 bracket x minus x1 that is -2. Because x1 is -2, so please write it in the bracket. Y minus 3 equal to under root 3 minus plus. Now multiply under root 3 in the bracket. So y minus 3 equal to under root 3x plus 2 under root 3. Now transpose y on the right hand side and -3 also on the right hand side. What we get? Under root 3x minus y plus 2 under root 3 plus 3 equal to 0.
required equations our answer। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋ ਫਾਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ and we get the equation of a straight line which passes through the point -2, 3 and makes an angle 60 degree with the positive direction of x-axis। Now have the another method to solve this sum। कि साडे कोले कोई होर भी तरीका हैगा वा जिहदे नाल असीं इस सम नूं सॉल्व कर सकीए। We already know derive the symmetric form। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮਿਟਰਿਕ ਫਾਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ we are doing this sum with another method, that is symmetric form। Now the given points, the given point that is -2, 3, -2 and 3, and what is the angle, and theta equal to 60 degree। Now the equation can be written in the symmetric form। The required equation, in the symmetric form, symmetric form we have already know about the symmetric form, that is x minus x1 over cos theta equal to y minus y1 over sin theta। We already derived this formula, you will be check or see in my previous videos। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ I know the value of theta and also x1 y1, so put the values of x1 y1 and theta in the symmetric form formula। Now it becomes x minus x1, that is -2 over cos 60 degree equal to y minus y1, that is 3 over sin 60 degree। Now cos 60 1 over 2, sin 60 under root 3 over 2, we already know। So it becomes x minus minus plus over 1 over 2 equal to y minus 3 under root 3 over 2। Now first of all we solve the denominator part, means what will we do, x plus 2 and it becomes 2 over 1 and y minus 3 and it becomes 2 over under root 3। Now both side 2 same, that is cancel out। Now what we have, x plus 2 equal to y minus 3 over under root 3। Multiply both side with under root 3, right hand side will be cancel out, so it becomes under root 3 x plus 2 equal to, मैं both side under root 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, multiply ਕੀਤਾ, under root 3 cancel, so it becomes
under root 3x plus 2 equal to y minus 3. Now multiply the under root 3 in the bracket part. So it becomes under root 3x plus 2 under root 3 equal to y minus 3. Transpose y on left hand side, minus 3 on left hand side, and equation becomes under root 3x minus y plus 2 under root 3 plus 3 equal to 0. Required equation of our answer. Now you will be see, check, in both of the cases our result is same. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ x x1 ਓਵਰ cos ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y y1 ਓਵਰ sin ਥੀਟਾ। x1 ਤੇ y1 ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਥੀਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ you will be use any method. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋ ਫਾਰਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਚੂਜ਼ ਐਨੀ ਮੈਥਡ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਸਮ। Find the distance of the line 4x minus y equal to 0 from the point P41 measured along the line, making an angle of 135 degree with the positive x-axis. Now first of all we will be discuss what is given in the statement. In the statement we want to find the distance of the line whose equation have given from the point, here is a point P whose coordinate 41 measured along the line, making an angle of 135 with the positive x-axis. This point P lies on another line. That line making an angle 135 degree with positive x-axis. And we want to find the distance from this point and where two lines are intersecting. Statement ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ 4x - y = 0 means a one line y equal to 4x or you can say 4x minus y equal to 0. ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ from the point, ਕੋਈ point P ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 4 1 ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਲਾਈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ 135 ਡਿਗਰੀ ਵਿਦ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ x ਐਕਸਿਸ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ 135 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ Q ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾਓ we will start this sum. Now students, we are solving this sum.
the given line सानू गिवन लाइन केड़ी है 4x minus y equal to 0 which imply y equal to 4x. It is considered equation number 1. साढ़े कोल जिहड़ी गिवन लाइन की इक्वेशन दिती सी उहनूं असीं लिख लिया. नाउ सेकंड स्टेप equation of the other line. Now here we will be use symmetric form. इत्थे असी symmetric form वाली जो फार्मूला वा we will be use असी वो वाला फार्मूला यूज करांगे. Now the equation of the other line what is the other line shown by green color ये वाली line. Now x minus x1 over cos theta equal to y minus y1 over sin theta equal to r. This is a known symmetric form. Now look carefully. Here x1 y1, x1 is 4 and y1 equal to 1. Now what is the value of theta? That is 135 and theta equal to 135 degree. Put these values, what we get? X minus x1 that is 4 over cos 135 y minus y1 that is 1 over sin 135 degree and these are equal to r. Now I write 135 equal to 90 plus 40. 90 plus 45. Now x minus 4 cos 135 I have changed in 90 plus 45. मैं 135 डिग्री का जिहड़ा कोण सी उसनूं दो हिस्से तोड़ लिया. एक 90 आ गया, दूसरा कितना आ गया 45 and y minus 1 also sin 135 that is sin 90 plus 45 equal to r. Now here we will be use property cos 90 plus theta. Cos 90 plus theta equal to negative sin theta and sin 90 plus theta equal to cos theta. ये वाली ऐसी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे here. So it becomes x minus 4 and minus sin 45 degree equal to y minus 1 over cos 45 degree equal to r. Now sin 45 and cos 45 we will put these
values of sine 45 and cos 45. Now it becomes x minus 4 sine 45 negative here 1 over under root 2 equal to y minus 1 over under root 2 equal to r. Now look carefully, all three terms are equals. I can also write these two terms like that 1 over under 2 cancel out. क्यों? Because ये equal ने, ये दोनों क्या बराबर ने, इस करके मैं डिनोमीनेटर नूं कट कर सकदा. Now x minus 4 over minus 1 equal to y minus 1 over 1 equal to r. Now equating first and third term and second and third term. So now from first and third term I have x minus 4 minus 1 equal to r, which imply x minus r negative r, and transpose 4 on right hand side we get x equal to 4 minus r. Similarly from second and third terms y minus 1 equal to r, which imply y equal to r plus 1. Now students, it is point on line that is x 4 minus r and y r plus 1. Now what I have written, जो ये वाली ग्रीन लाइन है सेकंड लाइन, ਇਹਦੇ ਤੇ मैं सिमेट्रिक फॉर्म फार्मूला लाया. कोई पॉइंट है एक्स वाई इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है एक्स वाई जिहदी वैल्यू की आ गई है मेरे को एक्स की वैल्यू आ गई है 4 माइनस आर तो वाई की वैल्यू की है आर प्लस 1. हुण पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ ये सम दा, both the lines are meeting इस पॉइंट पे जिन्होंने मैं क्यू का नाम दिता, दोनों लाइनां मीट कर रही हैं, विच इंप्लाई जेडे मेरे को ये दो पॉइंट आए ने एक्स ते वाई दे, जो कोआर्डीनेट आए ने एक्स वाई दे, एक्स ते वाई इस लाइन दे, वो इस लाइन भी की करनी चाहिए है, सैटिस्फाई करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि दोनों लाइनां इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं. जे पहली लाइन के कोआर्डीनेट भी वो इस पॉइंट तो उन्ने होणगे ते इस लाइन के कोआर्डीनेट भी इस पॉइंट तो उन्ने होणगे. इसदा मतलब की होया? इसदा मतलब ये हो गया दिस इज क्यू, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज क्यू. ये पॉइंट फिर क्यू आ कदों? इफ now we will use this equation means y की है मेरे को r plus 1 equal to 4
एक्स के कोआर्डिनेट की आ गए 4 माइनस आर। ये वाले जो मैं पॉइंट आ जो y इक्वल टू 4x इक्वेशन आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ Q ਬਣਿਆ। this is point Q. If r plus 1, that is y equal to 4x, now what we will get from here? We will be get the value of r. We get the value of r, then we will be able to know the value of x and y. So see carefully. Now r plus 1 equal to 16 minus 4r. Transpose 4r on left hand side, 1 on right hand side, and it becomes r plus 4r equal to 16 minus 1, that is 5r equal to 15, which imply r equal to 15 over 5, that is 3. Now I have got the value of r. r the value मेरे को 10 आ गई है 3. Now what the value of x and y? So therefore x equal to 4 minus r, that means 4 minus 3 equal to 1, and y r plus 1, that is value of r3 plus 1, that is 4. So coordinate of point Q, that is x 1 and y 4. ਹੁਣ मैं फाइंड कर चुका P ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ फाइंड ऑलरेडी गिवन सी पॉइंट P ਦੇ कोआर्डिनेट 4 ਤੇ 1। नाउ Q पॉइंट ਦੇ भी कोआर्डिनेट में किया, मेरे को आ गया 1 and 4, आई हैव फाउंड। नाउ आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P to Q, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन्स। आ वाली जी मेरे को लाइन थी यदि मैं डिस्टेंस मतलब अगर मैं क्यू पी ते क्यू दी दूरी पता कर लेना तो इस लाइन की दूरी पी पॉइंट तो मैनू किया फाइंड हो जाएगी। सो पी एंड क्यू दे विच मैं दूरी नापना चाहता हूँ। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द डिस्टेंस फॉर्मूला। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स? x2 माइनस x1 द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द स्क्वायर होल द स्क्वायर रूट, वो वाला फार्मूला ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ यूज़ करांगे एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स वी आर अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला। साढ़े को डिस्टेंस फार्मूला की होंगे पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स x1 for y1, that is 1, and x2 that is 1 and y2 that is 4. Now put these values in the given formula and
we will be able to find the result. So PQ equal to x2 minus x1, that is x2 1 minus x1, that is 4, plus y2 4 and y1, that is 1 square, and this becomes minus 3 square plus 3 square, and it becomes 9 plus 9, that is square root 18, which imply 2 into 3 into 3, and taking 3 commons, so 3, that is 2, our answer. ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, दूसरी लाइन के उपर पॉइंट दिता सी ते एंगल दिता सी। असी दूसरी लाइन के उपर सिमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई किया, उत्थों असी कोआर्डीनेट फाइंड किए पॉइंट क्यू दे। जदों साडे कोले पॉइंट क्यू दे कोआर्डीनेट्स पता लग गए, दैन वी अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड वी विल बी एबल टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी ऑफ दिस लाइन, जिहदी इक्वेशन की है y इक्वल टू 4x। सानू इस पॉइंट की लाइन की P पॉइंट तो दूरी पता चल गई।